औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। प्यारे स्टूडेंट्स, I am Dr. Saidullah Jan from Physics Department, Islamia College, Peshawar. Today we are going to discuss electroencephalogram, which in short is called EEG, of chapter number 12 of second year, that is about current and electricity. Hello? Okay, you are with me, I know. So, electroencephalogram, which we called EEG, it is the electronic device used to measure or monitor or record electrical activities in human brain. The electronic device used to monitor electrical activities happening in human brain. इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ब्रेन के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है और उसको रिकॉर्ड करता है ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मल्टी इलेक्ट्रोड्स. ये डिवाइस जो होता है मल्टी इलेक्ट्रोड पे मुश्तमिल होता है, which is fixed to the brain, and then the activities of the brain are being recorded through computer screen. इसका प्रिंसिपल क्या है? Recording voltage changes occurring from ionic current due to neurons in the brain. You are aware of neurons because you are a biological student and I have not that much know-how about the neurons, but electroencephalogram का प्रिंसिपल ये है कि ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और वोल्टेज चेंज होता है, और जब ये वोल्टेज चेंज होता है किसमें? न्यूरॉन्स के अंदर जो ब्रेन में एक्टिविटीज़ होते हैं, that appears in the variation in the voltage which is being detected and recorded by the computer. ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं. अब हम आहिस्ता आहिस्ता उस पर आते जाएंगे. एक्सप्लेनेशन में आते हैं. स्पेशल सेंसिंग ग्रुप ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड टू द हेड और स्कैल्प ऑफ अ पेशेंट. छोटे छोटे कॉइन्स की सूरत में वो होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं इधर 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 हर जगह पे. क्या किया जाता है? उसको फैक्स किया जाता है और उसके कंप्यूटर के साथ क्या होता है? कनेक्टेड होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं. किस में? ब्रेन्स के अंदर. द वायर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. मैंने कहा कि जो गुच्छा होता है इलेक्ट्रोड का, जो वायर्स होते हैं उसके कंप्यूटर के साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं. द स्मॉल वोल्टेज चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम आयोनिक करंट इन न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन्स आर रिकॉर्डेड बाय दिस ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोड्स. ब्रेन के अंदर एक पर्दा डायफ्राम्स होते हैं, उसके न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं उसमें, तो उसके अंदर आयंस होते हैं और उन आयंस क्या होती हैं? उसकी वजह से वोल्टेज चेंजेस आती हैं और वो वोल्टेज चेंजेस जो होती हैं आपके ब्रेन के साथ जो एफेक्ट्स इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो
पिकअप करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और कंप्यूटर को क्या करते हैं, फेंकते रहते हैं। द ब्रेन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज इज मेंटेन्ड, देखो ब्रेन के अंदर अभी बात है कि द ब्रेन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज इज मेंटेन्ड बाय बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। बॉडी के अंदर जो होते हैं, ब्रेन के अंदर जो होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है दैट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय दीज न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स। अच्छा जी, न्यूरॉन्स आर पोलराइज्ड बाय मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। न्यूरॉन्स जो होते हैं उसको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन को होता है पर्दा होता है, उस पर जो होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं न्यूरॉन, तो वो क्या होते हैं, उसको क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं। पोलराइज का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं। ये क्या करते हैं, दे आर बीइंग पोलराइज्ड, और जो पोलराइज्ड होते हैं ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये क्या करते हैं, ब्रेन के प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट पंप द आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो कि आयंस को पंप करते रहते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। न्यूरॉन्स आर पोलराइज्ड बाय मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, यानी उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, और मेम्ब्रेन वो क्या कर लेते हैं, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो क्या होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, और जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो क्या हो जाती है, वहाँ पर आयनाइजेशन हो जाती है, आयंस बनते रहते हैं। द ब्रेन करंट इज़ मेनली, जो ब्रेन का करंट मेनली बिकॉज ऑफ सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन that are injected through channel of neurons membranes। ये देखो मैंने क्या कहा कि जब ये न्यूरॉन पास करते हैं मेम्ब्रेन में तो वहाँ पर क्या होते हैं, आयंस बन जाते हैं, और ये आयन मेनली होता है सोडियम होता है, चूँकि आपको पता होता है कि हमारी बॉडी किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है। सोडियम प्लस होता है, पोटाशियम भी प्लस होता है, क्लोरीन प्लस होता है, कैल्शियम प्लस होता है। ये तमाम चीज़ें जो है हमारी बॉडी का हिस्सा हैं जो बनी होती हैं, तो ये आयन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आयन, यानी ये इसको इंजेक्ट किया जाता है थ्रू चैनल इन न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन, जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन होते हैं उनमें से इसको पास किया जाता है थ्रू प्रोटीन्स। These small variation in brains, these small variation in voltage and brain current are recorded by electrode and wavy type of graph is obtained on the screen। यानी wavy type of graph होता है जिसमें अप डाउन अप डाउन अप डाउन आता रहता है, ये रिकॉर्ड होता है। यानी ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है ड्यू टू सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन, while they are passing through neuron channel, they are being recorded by the electrodes and then are passed to the computer. So the abnormality of the brain can be studied from the plot. This technique is non-invasive and not harmful to the body। यानी इसमें आपको सर्जरी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और ये बॉडी को नुकसान ज़्यादा नहीं देती। ये देखो ये आपके दिखाई दे रहा है, ये न्यूरॉन है, और ये जो होते हैं आयंस वगैरह जो होते हैं ये पंप करते रहते हैं, कैल्शियम और क्लोरीन और सोडियम आयन जो होते हैं जब न्यूरॉन चैनल पे पास करते तो आयनाइज होते हैं। यानी ये देखो ये पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं जंपिंग में, ये साइनाप्सिस है, ये माइक्रोस्कोपिक उसका वो है, मैक्रोस्कोपिक वो है। ये देखिए वीवी टाइप ऑफ ग्राफ आपके पास आ गया है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ब्रेन का कौन सा पोर्शन जो है वो हमारे पास बेसिकली डैमेज्ड है या वो है। नॉर्मल ब्रेन का ग्राफ लिया जाते हैं, और जहाँ पर जो होते हैं एपिलेप्सिस वगैरह या कैंसर्स वगैरह की डिटेक्शंस होती हैं तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो है एबनॉर्मल होती हैं, वहाँ से जो एमिशंस होती हैं यानी चार्जिंग होती हैं वहाँ पर नॉर्मल से एबनॉर्मल तरह होती है। नॉर्मल ब्रेन में एक तरफ चार्जिंग इफेक्ट होता है, जब एबनॉर्मल होता है तो वहाँ से ज़्यादा जो है वो चार्ज, वो एरियाज़ जो होते हैं वो ज़्यादा चार्ज नज़र आते हैं। तो जो वीवी टाइप ऑफ ग्राफ है वो भी उसका क्या आता है, डिफरेंट नज़र आता है। अब हम आपको एक छोटी सी वीडियो में इन सेफेलोग्राफी के बारे में बताते हैं, इसको गौर से देखो और इंशाअल्लाह आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो छोटी छोटी दिखाने का मतलब ये है कि आप में ये डाला जाए कि आप भी देखा करें, इनकरेज करना है आपको।
अब जनाब इसका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी का प्रैक्टिकल एनिमेशन देख लो. आई एम थैंकफुल to the Google for providing such videos that are full of knowledge and that is making knowledge easy here for the students. Thanks to Google once again. So watch the video about EEG. My name is Shelley and I'm an EEG technician. Do you know what EEG stands for? It stands for electroencephalogram. An EEG is a type of a medical test that records the brain's electrical activity. This activity is sometimes referred to as brain waves or patterns. We record this data using small metal discs that we will place on the outside of your head. Getting an outpatient EEG here at Seattle Children's takes about an hour and a half recording, hookup, and cleanup. It's a painless procedure that requires just a bit of cooperation and patience. There are no needles or pain involved in an EEG. The worst part of it is that you're going to need to have your hair washed, and we'll take everything off with warm water before you leave. So let's talk about your EEG. We'll start at the beginning. You may receive instructions prior to your visit to sleep less the night before and wake up early. This is so you can get to sleep during the actual EEG itself. You remember, sleep is an important part of our recording. When you arrive at Children's, get your visitor's badge and then head to check in for your EEG. Once checked in, my name is Nick. I'll be working with you today. an EEG tech will meet you in the waiting area and walk you back to the lab. So your big job, Annabelle, this EEG, you just get to lay on the bed and relax. This is where we will record your EEG. We only have the patient and one parent or guardian in the lab at a time. So choose who you would like to have with you, and let's get started. And let both you and mom or dad get settled for the EEG. It is important that you lay down on the bed, on your back, through the entire hookup, which may take up to 20 minutes or more. The actual EEG will run for 40 minutes. We want you to be still and relaxed for the whole test. Remember, EEGs require a little patience and cooperation. To start, the tech will measure and mark your head with a washable marker. These spots are where our electrodes will be placed. The tech may ask you to turn your head from side to side so that all the marks go in the correct places. Next, each of those marks needs to be cleaned off using a mild, scratchy soap. We do this so that we can have a nice, clear recording. In other words, to collect just the information we want to collect. After your technologist has finished prepping all of the marks, they will apply the electrodes. To do this, we use a sticky salt-based paste that does two things. First, it is conductive. This means that it helps the electrodes record the signals from your brain. And second, it also makes sure the electrodes stay in place during the recording. This is a simple part of the EEG hookup with just a quick squish of the electrode onto your head and a soft cotton ball covering for some extra protection. But you will still need to lay still on the bed because if you tried to get up at this point, all of the electrodes would fall off. Once everything is on and the recording is started, parents may hold their children in their laps, so long as the electrodes stay intact. With some patients, cooperation for an outpatient hookup is more difficult. Kids under the age of 5 may have this very common reaction to the hookup process. They do not understand what is being asked of them and may become upset and struggle. In these cases, a patient can be held still for the hookup or even swaddled for the electrode measurement and placement if need be. Over the age of 5, we cannot restrain or hold patients down. In these cases, maybe a different type of EEG would be more appropriate for your child. Once all of the electrodes are on your head, we want to make sure that they're for the entire test. We will wrap your head with a gauze wrap so you don't have to worry about them coming off when you fall asleep. Lastly, the tech will apply 3 electrodes to your shoulder area. These will record your heart and muscle activities throughout the recording. We are now ready to start. During your EEG,
It is important that you stay calm, relaxed, and as still as possible. This is important so that the recording is clean and interpretable for the doctor or epileptologist who will read the study. Sometimes your tech may ask you to relax or lay still if you are moving too much to get an accurate recording. During the EEG recording, the tech will have you perform some activities that help us in collecting as much data as possible. These activities are known as activation exercises and consist of a series of flashing lights called photic and a deep breathing exercise. After these activation exercises, it is time for one of the most important parts of your EEG, the sleep portion. To make it as easy as possible for you to sleep, the tech will get you a pillow and a blanket and turn off the lights in the room. We will stay in the room with you the entire time if you need anything. Once the sleep portion of the test is complete, it's time to turn on the lights, wake you up, and end the recording. After the EEG is complete, the tech will get you all cleaned up with some warm water and then dry your hair off and send you on your way. The tech will also provide you with a post-EEG information sheet that has answers to frequently asked questions, including how you will receive the results of your EEG. You may have a bit of a bad hair day, but a quick shower or bath with warm water and your regular shampoo will remove any remaining peg. So, you've seen the clinical techniques, how polite were the people who were treating the children, and how clean and neat was the hospital. You have observed, you have seen. So, I have wondered in UK and in many hospitals, they were extraordinary clean, and the staff, whether nursing, whether doctors, they were very much cooperative and very much helpful, very much polite. They were every time I have seen them with smiling face in a very difficult situation too. So this is a little bit difference between them and us here. Mostly the patient are treated harshly. Approach culture is also there, and I will advise you that you are now going to join this profession. Maybe majority of you should join this profession, are going to join this profession. So you should be extraordinarily careful. You should be very much sympathetic to the humanity, and then see your prosperity level. That will be too much. कोशिश ये करना चाहिए कि आप बहुत पोलाइट रहें, आप बहुत खुश अखलाक रहें, क्योंकि डॉक्टर के लिए और एक उस्ताद के लिए ये पोलाइट रहना और खुश अखलाक रहना ये बहुत ज़रूरी बात है। और उम्मीद की जाती है आप इस मुल्क का फ्यूचर हैं, और इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए अब आप काम करेंगे। जो हो चुका सो हो चुका, अब मज़ीद हम कहेंगे कि उसके अच्छा होने के लिए कोशिश करें और उसको दलदल से निकालने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमा दे। Thank you very much. God bless you and wait for the next lecture.